Logical morning, dear Clatopians. Welcome to another session of English. आरसी पे फोकस करेंगे हर बार की तरह. One thing जो बहुत ही important होती है, हम एक पैसेज पढ़ते हैं. After reading a passage, the most important thing that we must understand is author का sentiment. Why do we say author's sentiment, author's mood? सी अगर आप ऑथर का मैसेज, ऑथर का सेंटिमेंट, ऑथर का मूड क्लियरली समझते हो, दैट very much helps in coming to the inference as well. So, what is this author's sentiment or mood termed in the language of reading comprehension? Well, we say tones and themes. Theme is very important क्योंकि theme जो होती है, it is in author's mind right when they सी अ सिचुएशन, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कैसे क्या प्रेजेंट करेंगे. दिस इज व्हाट tone and theme is all about. We usually get questions as in to understand or what was the author's tone or what theme is this entire passage directed towards. इन सब चीजों को समझने के लिए हमें ऑथर का सेंटिमेंट समझना बहुत जरूरी है. That is like majorly important. So, how do we do that? We mostly confuse ourselves with lot of inferences. एक passage के हम बहुत सारे inference निकाल लेते हैं. So इसीलिए here we are daunted with confusion. So, what to do as to avoid that thing? What to do as to clearly understand what the author is trying to say, and what not to do to get confused? This is what our session is going to be about, and हम इन minor चीजों पे focus करेंगे. So, I hope you guys are ready. Let's start with our session of tones and themes. बिफोर वी मूव फर्दर अहेड, एक चीज क्लियर करना चाहूंगी गाइस कि जो आप सोचते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, दैट इज नॉट नेसेसरीली व्हाट ऑथर इज आल्सो ट्राइंग टू सिग्निफाई. So before you dive into understanding the concept of tones, please make sure that you are following what author is trying to say. Author का क्या message है and what thinking, what thought process, what basics thought author has in mind, हमें उससे ही navigate करना है. Let's not keep our perspective and confuse it with the authors. जैसे कुछ जनरल टॉपिक्स होते हैं जिसमें एक हमारा माइंडसेट होता है. नाउ दैट इज नॉट व्हाट नेसेसरीली ऑथर इज ट्राइंग टू से. कई बार हम ये देखते हैं दैट ऑथर इज वेरी मच इन डाउट विथ व्हाट दे आर सेइंग. Author is not happy with the current situation. Author is trying to criticize the work of others. Author is simply presenting you with a lot of statistics, a study of a situation, a concept. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम ऑथर का लैंग्वेज इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिससे हम ऑथर की थिंकिंग से मैच कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज सिचुएशंस, क्रिटिकली सोचना, analytically sochna, that is what we must keep ready in mind. So let's begin and jump to the concept of tones and themes. Like I said, tone is author ka sentiment, attitude of author towards any subject that is being discussed, that is being presented in front of you. जो भी आपको passage दिया गया है, of course लिखने से पहले author ने mind में कुछ तो सोचा होगा. That is why tones is very important. It will help you reach to a proper conclusion as well. So coming to tones, different context की या तो एक ही टोन चलेगी या डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं एक ही पैसेज में. दिस इज लाइक बोथ वेज जो वेरी कर सकता है. इफ द ऑथर इज फॉलोइंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बुक को देख लो. बुक हैज सेवरल चैप्टर्स, बुक हैज सेवरल पार्ट्स. सो हर पार्ट में एक अलग टोन और एक थीम फॉलो की जा सकती है. whereas what we are presented with is a short passage or even a lengthy passage, जिसमें एक स्कोप होता है, या तो एक रेगुलर टोन चलेगी जो आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी. अदरवाइज इन केस ऑफ मे बी लेंदी पैसेजेस, टोन सीम्स टू वेरी एज पर द कॉन्सेप्ट. सो ये चीज का हमें बिल्कुल ओपन माइंड रखना है दैट इफ यू आर प्रेजेंटेड विथ अ पैसेज, follow the tone. A tone might change when you are reaching the end of the passage, or it might carry forward with the same theme.
So keep an open mind when you are reading a passage. Identification of tone lets you figure out implicit information and inferences. Implicit क्यों कहा गया है? Because sometimes things are not directly presented to you in a plate. Well, that is most of the times. So हमें एक open mind, like I said, रखना है when we are focusing on author's sentiments, author's emotion. जो चीज author को sensitive लग रही है is not necessary कि आपको भी sensitive लगे. But like I said, author is our God. हम ऑथर को ही फॉलो करेंगे और जो वो सोचते हैं हम उनसे अपनी सोच को मिलाने की कोशिश करेंगे. That is what this session is going to be about. After this quick introduction, we'll jump on to some types of tones that I have collected here. Some majorly asked tone जिसमें विदाउट कंफ्यूजन आप इतनी क्लैरिटी ला सकते हैं कि आप पैसेज पढ़ते ही समझ जाइए कि टोन क्या है ऑथर की. इवन दो यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन और नॉट अबाउट अ टोन, टोन को समझना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज that will help you reach the implicit conclusion, implicit inferences and information जो भी है वो clearly आपको समझ में आनी चाहिए. This is what is the purpose of identifying the tone and not for the sake of just being asked in the question. Tones. We say tones can be subjective or objective. It can be based on what the author has presented in the passage and concerns a particular subject, uski sensitivity, or object. Generally speaking, some things that are upsetting, as in general, for example, current poverty scenario, wo upsetting hai as in general. So we can say tones can be subjective as well as objective. So, once again, repeating myself, please keep an open mind when you read a passage. Starting with a few most asked tones, I'd go with explanatory, laudatory, and patronizing or condescending. सी यहाँ पे अगर आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता है तो काफी हद तक टोन क्लियर हो जाती है. So what we are going to do, as the word says, explanatory. किसी भी चीज को बहुत डिटेल में बताना. That is to explain in a great detail. Descriptive tone explanatory के अंडर आ जाती है. जब कुछ बहुत ही डिटेल वे में दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा. When you read a passage, things presented to you are in great detail. तो हम आ जाते हैं explanatory पे. आंसरिंग क्वेश्चंस, गिविंग रीजन बिहाइंड एनी इंसिडेंट. कोई भी इंसिडेंट को डिटेल में डिस्कस किया गया है, ईच एंड एवरी स्टेप पे बहुत रीजनिंग दी गई है. दैट इज अगेन एक्सप्लेनेटरी. लास्ट बीइंग elaborating, expounding and self incriminating. This is again what कमिंग अंडर एक्सप्लेनेटरी. सो ऑल इन ऑल जब भी कोई चीज आपको बहुत डिस्क्राइब्ड वे में प्रेजेंट की गई है, यू कैन इजिली पिक द टोन एज बीइंग एक्सप्लेनेटरी. कमिंग टू लॉडेटरी. नाउ यहाँ देखेंगे तो मैंने टू लॉर्ड को बड़े इजिली लिख दिया है टू प्रेज, सो दैट यू नेवर फॉरगेट दैट लॉडेटरी हैज एनीथिंग टू डू विथ क्रिटिसाइजिंग और सेइंग बैड. नो, इंस्टेड द वर्ड to laud means to praise. So to admire something or someone, that's laudatory. Achievements, किसी के achievements discuss करना, किसी के honor में बोलना, that is all under laudatory. So whenever you find author speaking great deal about someone or speaking very nicely, praising a situation or any character they have picked, focusing on one person and speaking a lot of good things about it, positive mode pe ja raha hai, that is all laudatory. While on the other hand, patronizing. पेट्रोनाइजिंग जो वर्ड है हम लिटररी सेंस में भी यूज करते हैं. किसी एक चीज के तरफ पेट्रोनाइजिंग होना मीन्स उसको नीचा करके, मीन्स टू superiorly speaking of something else, thinking you are superior, जो आप सोचते हैं वो superior है as compared to something else. इसको scornful में भी ले सकते हैं guys. This can come under being snobbish and scornful as well. Scornful means यहाँ पे लिखा है considered inferior in author's view, मतलब किसी और के regard to other people हम अपनी चीजों को इंफीरियर ले लेते हैं.
कंसिडर्ड इंफीरियर इन ऑथर्स व्यू, मतलब ऑथर किसी चीज को नीचा बता रहे हैं और उनके पॉइंट्स को बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं. दैट इज स्कॉर्नफुल, दैट इज पेट्रोनाइजिंग, दैट इज कॉन्डिसेंडिंग. सो ये वाली जो टोन है, दैट यूजुअली कम्स व्हेन द ऑथर इज नॉट हैप्पी विद करंट सिनेरियो एंड इज प्रेजेंटिंग सजेशंस कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ, why is that of more good, why that is more advantageous, why that is more superior, या जो currently हो रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ, that is not a good way of presenting things. हमें वो खुद के points को superiorly present करते हैं. So that is patronizing. Coming to the next three tones that I'd like to present is, first of all ले लेते हैं acerbic. एसर्बिक में जब ऑथर खुश नहीं होता है किसी सिचुएशन से, ही इज हाईली डिससैटिस्फाइड, किसी चीज को बिल्कुल ब्रूटली सुनाए जा रहे हैं कि ये करंट सिनेरियो ये तो मेरे अकॉर्डिंग है ही नहीं, आपने क्या सोच लिया. इट कैन बी लाइक शोइंग डिससैटिस्फैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, कोई कैलेमिटी हो गई है एंड द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन इनफ स्टेप्स, तो ऑथर का बिल्कुल डिससैटिस्फैक्शन बिल्कुल खुल करके बाहर आ रहा है. सो दैट इज लाइक इन एसर्बिक टोन गाइस. एंड एक्सट्रीम लेवल पे जो डिसलाइक, डिसडेन, डिसअग्री, ये तीन टर्म्स मैंने एसर्बिक के लिए लिख लिए हैं, सो दैट यू ऑलवेज रिमेंबर कि एसर्बिक टोन्स फोकसेस ऑन ऑथर प्रेजेंटिंग एक्सट्रीम डिसडेन और डिसलाइक फॉर समथिंग, अग्री ही नहीं करते हैं. You will be able to answer the author disagree or agree questions that follow RC passage. If you are very clear with this tone, acerbic, you can easily answer the author's agree and disagree questions that follow a passage. So this is like one way of answering a question based on the tone. Apologetic, as the word says, apology व्यक्त करना से better I'd say remorseful, पछतावा होना. When you feel apologetic, you feel sorry for something, आप कुछ करके पछताते हो. That is an easy way to remember this tone, apologetic. When you regret something, you are filled with guilt for a mistake. Then author would be expressing an apologetic tone. Showing regret, I wish I would have done this so that this world would be a better place. We all should be people with who are working for the environment, so that this is like apologetic. You feel sorry for something. Regret करते हो आपकी काश ही कर सकते. So that is apologetic. Generally talk of statements related to wars, natural calamities, natural disasters, catastrophes. Like I said, कुछ environment based है and you feel really sorry for people living in like on planet earth and they are not doing anything. and जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेटा थनबर्ग की कोई स्पीच ले लो, वो दो टोन में चली जाती है. if I don't know if you guys know Greta Thunberg, but she is worth knowing. And Greta Thunberg has given, being of such a young age, has given out of this world speeches, impeccable approach towards presenting herself. And उसकी टोन में generally एक तो होता है बहुत गुस्सा, she is, I'll come to that tone in coming slides, और एक होता है apologetic, like she feels sorry for people living on this earth. Coming to belligerent, belligerent means जब हम बोलते हैं two parties, remember two parties who are in conflict, battle, or a war, they sit and they have conversation, they discuss, talking about views and notions and discussion of two parties who are against each other, guys, remember, who are against each other, who are in a conflict. So they will have a conversation, they will present points one after the other. So इस tone को हम बोल देते हैं belligerent. Coming to the angry tone that I was talking about, that is indignant, guys. Indignant tone भी बहुत पूछी जाती है. Reason being because whenever you get such passages wherein the author is disdain and dislike comes under acerbic, but जब वो actually बहुत angry होते हैं current scenario को लेके, then we choose the tone angry or indignant. Expresses creators outrage. एक आउटरेज मतलब अपना गुस्सा ही निकालना, गाइज, यू आर हाईली फ्यूरियस, बहुत ही गुस्से में है किसी चीज को लेके एंड जस्टिफिकेशन की मांग करते हैं किसी सब्जेक्ट को लेके. दैट इज
indignant. Justify your outrage towards an unfair system. Like I said, किसी चीज की तरफ justification demand करना. You are not happy with the current scenario and you demand justification. That will come under indignant tone. फिर हम आ जाते हैं objective पे. Well, objective में particularly किसी के अगेंस्ट हम कोई फीलिंग्स नहीं व्यक्त कर रहे हैं, बट वी आर impartial, we are unbiased to a situation. हम दोनों ही situations के against जाके नहीं बोल रहे हैं, and we are not favoring also, but we are not impartial as well कि एक को हम उठा रहे हैं, दूसरे की तरफ हम बिल्कुल अपना dislike दिखा रहे हैं. So that sort of tone is known as objective. One way to grasp this tone is such passages would avoid usage of pronouns I or you. They'd rather give you a formal tone. In general बोलेंगे और author का एक particular personal perspective नहीं आता है. जैसे I demand justice. तो ये हो जाएगा या तो indignant या acerbic में चला जाएगा कि dislike करने के बाद आप डिमांड कर रहे हो. बट ऑब्जेक्टिव विल बी अ फॉर्मल टोन. बहुत फॉर्मली बोलेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, जनरली बोलेंगे, इम्पार्शियल वे रखेंगे ऑफ स्पीकिंग. कमिंग टू सिनिकल, जो सिनिकल टोन है, टॉकिंग अबाउट अ पर्सन यू डोंट ट्रस्ट कंप्लीटली. एक डाउट रखेंगे व्हेन द ऑथर इज presenting some points of facts, but he is not in complete trust of whatever he is talking about. This shows that author is not actually convinced by subject words and actions. For example, government has presented some policies, but the author does not seem to be completely agreed by those policies or is presenting distrust towards the system. So ये हो जाएगा cynical. When the author has not given his complete trust to something, थोड़ा बहुत डाउट में है, एंड दे आर नॉट इजिली, दे डोंट साउंड कन्विंस्ड. सो वो टोन आ जाती है सिनिकल. Okay, now moving on to the next two type of tones, we'll say sarcastic and biased. Coming to sarcastic, it conveys meaning that is exactly opposite. Sarcastic tone का मतलब जब आप कुछ कहना चाहते हो और उसका उल्टा मीन करते हो. For example, sarcastic means for example, if you say to someone, "Oh, I'm so happy that you revealed my secrets in front of our parents." So that is not exactly like actually something that to be happy about. But आप sarcastically बोल रहे हो, that means you mean opposite of something. So these are used for topics that author is not much in favor of. याद रखना ये गाइस, when the author is not supporting something, favor में नहीं, जैसे किसी चीज का फेवर ना लेते हुए उसके प्रति फेवर जताना, दैट इज उल्टा बोलना. सो सरकास्टिकली स्पीकिंग. सो ये टोन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी व्हेन द ऑथर इज नॉट प्रेजेंटिंग हिज कंप्लीट फेवर फॉर समथिंग. कमिंग टू बायस्ड, while favoring a certain thing, person or group over the other, we tend to utilize one-sided tone. Bias मतलब किसी एक चीज को फेवर करना, पार्शियल होना, एक चीज के बारे में ज्यादा बोलना, दूसरी चीज को सपोर्ट नहीं करना. दैट इज बीइंग बायस्ड. इट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस ऑथर स्टैंड वन थिंग ओवर द अदर. बायस रहना किसी एक चीज के लिए, दैट इज अ बायस टोन. Okay, coming to next set of tone, we have didactic and ironical. अब जो डायडैक्टिक टोन है वो क्लियरली समझ में आ जाती है. क्यों? बिकॉज थ्रू दिस यू आर इंस्ट्रक्टिंग. जब हम वो पैसेज रीड करते हैं हमें ऐसा लगता है दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू इंस्ट्रक्ट अस, ऑथर इज ट्राइंग टू इन्फॉर्म अस व्हाई मॉरल और पॉलिटिकल लेसन्स. कुछ सिखाना चाह रहे हैं. जब हमें कुछ सीख मिलती है देन यू कैन विदाउट अ डाउट गो फॉर दिस डायडैक्टिक. जब हम कुछ सीख लेते हैं, दैट इज डायडैक्टिक. आयरॉनिकल को सरकास्टिक से कंफ्यूज नहीं करेंगे. इट इज ऑफन कन्वेड यूजिंग सरकाजम, बट इसमें एक एग्जैजरेशन भी दिख जाता है. बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई चीज बोली हुई जाती है, या कई बार अंडरस्टेटमेंट भी होता है. किसी चीज को क्लियरली जस्टिफाइड नहीं देखते हम. So attention to difference between the way a subject is described and what is actually true about the subject. Irony ये होती है जब author उस चीज को point out करते हैं
कि एक चीज की एक्सट्रीमिटी कितनी है बट वो उस हद तक दिखाई नहीं गई है, तो ये अंडरस्टेटमेंट में आ जाएगा। या तो वो किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बोल देंगे, तो वो एग्जैजरेशन के थ्रू आयरनी प्रेजेंट हो जाती है। या तो बोल कुछ और रहे हैं बट दे आर मीनिंग समथिंग एल्स, तो वो थोड़ा सरकाज़म के फॉर्म में आ जाती है। सो दिस इज हाउ आयरनी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन अ पैसेज. So, guys, these were a few tones that we collected and discussed today. And I hope after this session, you are able to understand the tones, what the author is trying to convey. Author का message समझ जाएंगे. For more such videos, don't forget to like, subscribe, please hit the bell icon. This is me, Palak Rajani, faculty at the rate Vidhigya. Will come with more such videos. Don't forget to show your love and press the like button and follow the tones according to the words. Till then, keep practicing, stay motivated, stay logical with Vidhigya, your best pal in CLAT Preps.